Hello everyone, welcome to the SBI Securities weekly wrap podcast. The Indian equity markets witnessed a steep sell-off during the week, with Nifty and the Sensex falling 2.7% during the week. ब्रॉडर मार्केट्स में भी बड़ा करेक्शन देखा गया तो मिड कैप इंडेक्स 7.7% इस हफ्ते करेक्ट हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स और वर्स्ट था 9.5% करेक्शन। और हमने देखा कि काफ़ी स्टॉक्स में लगातार हम करेक्शन देखते आ रहे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी इंडेक्स 9.5% नीचे बंद हुआ इस हफ्ते। हेल्थ केयर इंडेक्स भी 7.6% नीचे बंद हुआ। तो फार्मा एंड हेल्थ केयर में भी कोई रेस्पाइट नहीं थी। ऑटो कंजम्पशन सब सेक्टर्स नीचे थे। अगर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर सिर्फ 1.7% नीचे बंद हुआ एंड आईटी सेक्टर सिर्फ 4% नीचे बंद हुआ। बट सभी सेक्टर्स इस हफ्ते नेगेटिव में बंद हुए। For the week, FIIs net sold 14,152 crores worth of stocks. So FII selling continues with the dollar index higher and US becoming an attractive destination. FIIs continue to sell in our markets. But DIIs this week net bought 14,400 crores. So literally matching money to money, and robust mutual fund flows are supporting the DIIs. So DIIs are accumulating stocks at lower levels. Some of the key reasons behind this correction is that President Trump's continuous announcements on tariffs, on trade barriers is all making emerging markets nervous, and we are seeing this underperformance by India. ऑल्सो अगर रिजल्ट्स का देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी वीक रहे हैं, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप्स के। एंड हमने देखा है कि लगातार हाई वैल्यूएशन के कारण रिजल्ट्स ना अच्छे आने के कारण करेक्शन देखा जा रहा है मिड एंड स्मॉल कैप्स में। One bright spot from the Indian market perspective is that mutual fund flows have remained intact. तो जनवरी का म्यूचुअल फंड डेटा जो इस हफ्ते आया तो SIP फ्लोज 26,000 करोड़ मंथली फिगर पे इंटैक्ट है। तो नेचुरली म्यूचुअल फंड्स को पैसा मिल रहा है एंड वो डिप्लॉय कर रहे हैं एट लोअर लेवल्स। Coming to the key corporate news of this week, so Kotak Mahindra Bank, the RBI has lifted the restrictions that it had placed on its credit card division, and the bank can resume its credit card business. So positive for Kotak Mahindra Bank. Happy Forgings, the company has signed an MOU with a global manufacturer to supply heavy forged and machined components. NTPC Green में तो ONGC एंड NTPC Green का एक जॉइंट वेंचर है जिसने आयाना रिन्यूएबल पावर एक्वायर किया है। तो ये 19,500 crores का एक्विजिशन है एंड ये कैपेसिटी बढ़ाएगा NTPC Green का, तो पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। Some macro news that was reported. So India's January inflation, the CPI inflation was lower than estimate, and food inflation also came in lower than estimates. The IIP data for the month of December also was on the weaker side. So overall, this has increased the probability of another rate cut from the RBI in the February policy meeting. However, in the US, we are seeing the inflation going up again. So in Jan at 3% on a year-on-year basis, it was higher than estimate. And with tariffs yet to come into effect, we could see inflation trending higher in the US. चलते हैं ऑर्डर इनफ्लोज की ओर। तो इस हफ्ते काफ़ी ऑर्डर्स मिले कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को। इनमें से की ऑर्डर्स थे BHEL को एक 8,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, एंड 6,200 करोड़ रुपीस का दूसरा ऑर्डर मिला दामोदर वैली कॉरपोरेशन से। सो पावर सेक्टर में केपेक्स काफ़ी तेज़ी से हो रहा है एंड BHEL एक मेजर बेनिफिशियरी है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को भी 962 करोड़ का ऑर्डर मिला फ्रॉम नेवी, तो डिफेंस में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं. वाटेक वाबाग रिसीव्ड अ 3,251 crore order from Saudi Arabia for sewage treatment plant. So again, it's a big order for the company. Looking at the key events next week, so the Q3 earnings season is largely over, and next week we would see some results from ABB India, CIE, Automotive, but largely the earnings season is over. So the market will now shift its focus back again to global events, and especially developments on the trade front in the US. Any comments from President Trump with regards to the Russia-Ukraine war, the Israel-Hamas war also will be closely watched. And the Fed's FOMC meeting minutes of Jan will be released next week, as also the weekly jobless claims data. So friends, that's it on the weekly podcast today. Thank you for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.